know that Dr. Sanchetee is it is a, our senior fellow and senior scholar. Dr. Pratap Sanchetee is MD and DM in neurology and has worked as a neurologist in armed forces. He has keen interest to bridge spirituality with science. He has been working as professor in genealogy and guided many young students in Jain Bharati. He has published more than 150 articles in various national and international journals and chapters in books and monograms. So today, he will deliver his lecture on this topic. His topic. I request Dr. Sancheti, please start your lecture. Uh, Thank you very much, sir, for the kind introduction. Am I audible correctly, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I'm sharing the screen and please confirm. Yes, it is visible, sir. I'll make it the full screen and then start, sir. Thank you, Chairman, sir. Welcome to all to the second session of the RTM. I hope my voice is clear. Yes, it is clear. Second session of the RTM. As we know, brain and mind represents two complementary yet distinct dimensions of a living being. Considering the wide topic, I will not focus into the everything. I will limit my deliberation to the few important facets only. Giving you a brief introduction, I have talked this earlier also. The human brain consists of an extraordinary complex neural network comprising approximately 86 billion neurons. With an estimated axonal length, if you take the wirings of this one axons, the total length will be around 1,000 kilometers. You can see what is the extent we have got. But more important that each neuron forms roughly 10,000 synaptic connections. Means they are connecting to each other with the 10,000 one. So the total synapses, if you go into, and that is the real value of a human brain, is the 10 raised to 15 synapses. It's not only the number 86 billions, but it is a 10 raised to 15. Now communication, this network occurs through the electrochemical signaling, despite constituting a small fraction of the body weight. Brain is approximately 1300 grams in a 60 kg body weight. It consumes 1/5, 20% of the total body blood volume, as well as the total body oxygen production. So 1/5 of this one, and the weight is less than 2%. That shows the importance of the brain, both metabolically and functionally. Now, brain generates and integrate awareness through what we call in our terminology as neural correlate of consciousness, short NCC. Some of the important areas I have just named: prefrontal cortex, which will be for decision making and executive functions; limbic system for the emotion and memory; thalamus, which integrate all the sensory inputs, be it from the external world or from the internal body. More important is the default mode network, and there are many networks I will be talking in the next slide. Giving you a brief output of the scientific perspective of the mind. We, in a science or modern neuroscience, views the mind, brain, and body as an integral continuum. They are not the separate. They are part of the each common segment or common seed. Mind is an excellent creation of the nature, bestowed on all forms of the life, and highest developed in the human beings. That is the one. Scientifically,
it is a functional extension of the structural brain. I will be stressing once again. While brain is a physical organ of intricate network of neurons and bioelectrical processes, mind is a dynamic, impermanent, and non-material flow of awareness and experiences, purely subjective and private in nature. You cannot gauge it, communicate your feelings to this one, except in the words. It's a set of functions which works on the electromagnetic energy. We'll be taking this also later on. And influence is important one. These electrochemical signals influences the neuroendocrine secretions to guide instinct, emotions, feeling, and all the functions which are being carried out by the mind and the brain. Thus, mind functions as a dynamic and highly adaptive system, influencing neuroendocrine activity and the hormone formations. All philosophies, including Jain Darshan and science, concur that it has got no conventional structure, formless and weightless. Because being a system or the software, it doesn't have got any significant structure. That is the beauty of this one. But one question which will remain unanswered my talk is that do we possess an individual mind, or are we part of the global or a collective mind? That we are sharing the mind with the so many people around us and so many natural events. But that's a, as I said, mind is an emergent property of the brain functions. It's how the brain exhibits its functions. That's what. And when something mental activity comes out, certain areas of the brain, they get brightened up or dampened in the fMRI. Thus, we have got objective evidence, whether it being a happiness, being the anger or the violence. The areas of the brain, they work simultaneously. So it's a private phenomena, and this is a structural brain component which influences mental, vocal, and physical activity. We call it in our common trio, man, vachan, or kaya. In neuroscience, the physical mind, comparable to the Dravya mind, Dravyaman, which has been put it in the Jain philosophy, refers to the mental processes generated through the brain activity such as perception, memory, thought, emotion, language, self-awareness. Now, all these functions, they depend upon the neurons, synapses, sensory inputs, body state, and neurotransmitters. That is there, you can't communicate or can't. So the physical mind or the Dravyaman is essential for the expression of the mind functions. As I told you in the previous about the DMN or the default mode network, there are thousands of the networks within the brain through which they are like a SOPs. They are written in our brain, and based on the situations, they come into the play and exhibit their actions. That these SOPs are in the numerous. In fact, we have not been able to totally count them and totally outline them. But what important is the DMN, which I just said, and this is how, because DMN is very important in controlling our thoughts. It has been estimated, no true figures, 60,000 thoughts are being generated in our mind per day. But there are people who do not have got the focused thought. They keep on wandering from one task to another at the same time or little later. What important, why I am again pointing out DMN again and again, that when mind wandering or daydreaming or excessive use of the thoughts or excessive spreading of the thoughts, DMN activity increases. And in contrast, like meditation, when the brain comes to the calm state,
DMN activity decreases. In fact, this is an objective evidence and can be used as a biofeedback mechanism that which portion of the meditation will be helpful in controlling our thoughts. This is one of the important slides I have discussed sometimes earlier also. Layers of the mind. They are not part of the mind. Means they are continuum. They are continuum from the bottom. So this monolith which is there in the diagram, only 5 to 10% is in the conscious mind. And another rest is in the unconscious. So when conscious mind we are talking, it usually points to the rationality, analytic, cognition, whatever we are doing right now is what is the consciousness. It is not only consciousness, it is not akin or equivalent to the awareness. It is the conscious awareness and bhav and short-term memory, which we get immediately unless filtered and goes into the memorygram, it is filtered out. So this is the conscious mind. But the biggest challenge and biggest thing is what is in the depth. For the sake of convenience, it has been again divided into the two, sub or the pre-consciousness, subconsciousness or the pre-conscious. But mind you, sub doesn't mean it's below. In fact, it is higher in the echelon. And the extent of the sub or the unconsciousness, we are not able to quantify it right now. Whether it's one is 30%, another is 20, 40, 60, we are not very sure. But subconscious mind is in the immediate vicinity of the conscious mind. And with the efforts, we can convert part of the subconscious mind into the conscious mind. And it holds short and long-term memories. Very important one. Behaviors, perceptions, experiences, combined with the emotions, belief, and the meaning. So this is the where subconsciousness is like a RAM in the laptop or computer, where you come to when you need a program like I need a PowerPoint and the Zoom, I have taken out. Once I will close the computer, they will also go out. So that's a very important one. But the unconscious mind, the crux of the human mind is the unconscious mind. And it is not the unconscious. Sometimes I call it as a superconscious, though it has got a different meaning related to the Keval Gyan. But superconscious, because it is the main bulk of our mind. And many functions which we do spontaneously, unknowingly, these are the like facial recognition, situation analysis, error detection, memory, thinking, attention, reception, so many functions are there. What differentiates it from our common laptop or the computer? That there is an online monitoring and changes in the plan, which occurs in the milliseconds, nanoseconds. These online functions. Even sometimes we have seen that the mind starts functions earlier than the action. So that is the where beauty of the mind is there. Excessive, sorry, uh, what, just a minute. Both neuroscience and the Jain philosophy recognizes that that much of the human behavior arises from the non-conscious processing, the unconscious mind and the subconscious mind. Jainism describes these latent tendencies as the samskaras, which perpetuate karmic bondages unless transformed through awareness, discipline, and ethical living. If one function of the brain, I wish to point out neuroplasticity. The word has come from the plastic, which can be stretched to a small extent, not to a big extent, if you don't want to break it up. So it is adapt to the change circumstances. So whenever the circumstances changes, like I just forgot my changing my paper. So I was looking for, so it adapts to the change circumstances.
And with the new learning, new teachings, or with the illnesses like injury or stroke, plasticity comes. Earlier, we were thinking that it doesn't occur in the later life, but we now know very well it changes occur throughout the life. In the beginning, when the neuroplasticity came into the being, we were just thinking that it occurs in the neurons only. But now we know it occurs in the supporting tissues like glia and the blood vessels, vascular cells. So neuroplasticity is an important where you can learn, you can improve yourself, and of course you can harm yourself as well. Now, before I go further, one question which always will be differing from the philosophy that animals, do they have the mind or not? In my personal observation and in the literature, all the life, every life, be it a unicellular, be it be multicellular, be it be a one sense or the fire sense, they have got a neural element. I'm not saying brain. They have got a neural element which does the functions of the brain, that is perception, reception, perceptions, and the action. And similarly, they have got a mind of their own. But this will mind not be what human has got, which is the highest development. So, to our understanding, mind animals have got some form of mind, which may not be akin or extend to us, but they do possess the mind, which is relevant or proportionate to their brain development. But if you look into the what is the difference between the animal and the human mind, that's a big question. Big question is that while animals have got a mind which protects them, which helps them in their getting food and other things, so basic elements are there in the animal mind. But human has got a certain big things, abstract thinking, judgment, cognitions. These are the properties which have been bestowed on the human brain only. Now, before I go into the further, I will talk about the three characters which changes our mind or the mental behavior. I will not take all the things because of the brevity of the time. First is the belief. Our action always depends on our beliefs, whether it's a religion, whether it's a social, whether it's a educational, whatever the belief. And these beliefs have been identified for the in the four categories. And their basic function is on the survival, safety, and the security. One is the instinct, that is the basic behavior, belief in any animal, being the human or being in the unicellular organisms, which occurs at the species level. Perhaps the genome decides this instinct. Second is unconscious belief. These are the beliefs which we get in our early stage when our reptilian brain is developing. And it is in utero, means when you are in the mother's womb, or first 2 years. And these are the areas where basically for your protection. These beliefs are for your protections. Like fire is going to hurt me. That's one example. Or a dog can bite me. Next comes the subconscious belief. And these are the emotions which are related to the mamatva, means oxytocins. They are emotional learning, and this occurs in the early childhood, 2 to 7 years. And here, some different reactions are developed, like with the uh, positive climates, we go with the reactions of happiness, and for adverse circumstances, we deal them with the fear, anger, or sadness responses. The last one, the conscious beliefs, or what we call as rational mind, is learning when the neocortex of the brain, when the neocortex is developing,
that is usually up to 24 hours. But now we know even till today, at the age of 78, I am also developing my conscious beliefs. I'm changing the previous one, I'm getting the newer one. So that's the one belief. A short word about the ego. Ego represents the organized sense of self through which mind interprets experiences and regulates emotions. We get our ego either from parents, family, friends, schools and colleges, community, or the religions. And these ego these impulses, they decide our ego and turn into our emotions, passion, and the feelings. If we are not using the ego in correct way, what we call it as the pramad, that if you are using it as a adverse one, you are attaching your karmas with you. So controlling the ego or a positive way of using the ego is one of the important lesson which we have to go into the mind. Sorry. The third point which I want to talk to you is the primal drive. Primal drive are the basic drives for you which are there for your survival. Any life, every life will be bestowed or with the blessed with the primal drive of hunger, fear, species reduction, species productions, reproduction, possession. These are the things, basic connotation in their life. And these can be modified or controlled by the mind. These are the important one. And they develop from simple to the complex programming. So if you uh, deal them in the bud or nab them in the bud, then the primal drive can be controlled in the beginning. Otherwise, it can be modified by emotional reactions, how much rush you get, how much you are attached to the particular, be it taste, be it with a smell, be it with a friendship, whatever it is, love. So everywhere, the rush is the where main things comes in the primal drive. And by repeated involuntary or voluntary actions or the instructive actions, you can control through your mind also. This is the one I will like to talk to you little in more detail. Neuroscientific universal mind. Different tradition philosophies use different names. Vedanta put as Brahma or the cosmic consciousness. Jainism put it as an infinite consciousness. Buddhism as universal awareness. Theosophy and the Western idealism put it as a universal mind. The basic idea is that the individual minds are not isolated. They participate in a deeper field of consciousness or intelligence. And they and even in the mind in our own world is a different one, what we are just talking or we are conversant with. While neural structure or mechanism are found in all living systems, so also the mechanism of mind at those sites. The relationship between universal mind and physical mind, that is the individual mind, has been explained differently in different philosophies and the neurosciences. The subject sits exactly at the border where metaphysics shakes hand with the some of course sometimes awkwardly with the biology. So whenever the philosophy and biology meets, their meeting is not usually pleasant one. But what we are seeing, the neuroscience puts everything in the universe as a continuum. Even if you look into the bottom of the diagram, even with the earth, we have got a two-way communication. Within our own body, from my limbs to the brain, my eyes to the brain, from all the organs, stomach to the brain, there is a two-way communication. This is what we call as biofeedback mechanisms which are there. So the feedback is one of the important thing in the nature, and it is there in this one also. But since we got no particular point of the measurements, no objective measurements can be
possible of the universal mind, neuroscience is still away from accepting it in the toto, to inclined to believe it. But some phenomena in the nature, they point that there is a universal mind. Example, collective behavior, collective empathy, synchronized social cognition, mirror neurons, meditation, and mystic states. The collective, this one, jihad, what is the jihad? It is a collective psyche. When we go into the when we go into any religious congregation, we just say Jai Ho, Jai Ho. This is a collective mind working. But in this, that is the what open or outward it is there. But inner we are communicating each and other very well. Science is giving few of the evidences that when we do the brain imaging, particularly the fMRI and the high, high class, sorry, Suresh, so I'm sorry, I'm closing that. Uh, Brain imaging, when we do, we are getting some of the evidences that we are working in. Uh, I'm so sorry for the disturbances. Uh, then the when we do the fMRI or the higher grade of EEG, there is a dissolution of the self boundaries, altered parietal lobe activity, which tells us the our place in the time and place, parietal lobe, the non-dual awareness. So these are the evidences, particularly in the fMRI, we can found that there is some collective evidences are there when we are doing the mass meditation, mass any prayer. Then these are the dissolution of the self boundaries are there, and even in the single person also within the brain there is a dissolution of the self boundaries. If you go into the other side of the diagram, we have got 4 layers of the mind complex. Cellular, as I said, each cell of the body has got all the functions which are there in my brain, which are there in the universe. So these are each cell has got a mind, it is own. It is a broad way, but not the conventional way. Then individual mind, which we are talking right now. Then regional mind. Even my mind is not there, which is there in the my brain only or within the mind. It is even little outside also. Assuming that they are in the waveforms, which are there in the what we call as the aura or the lesia. Perhaps this represents our regional mind complex. But bigger is universal mind complex, which is guiding all our mind actions. That is a theoretical model. Now, bridging the Jainism and the neuroscience, can we do it? Well, we can shake hand at some places. Dravyaman, as I told earlier, neural substrate, physical or the material mind. That we have almost come into the conclusion. Though we have not proved it, but it is equivalent to the Dravyaman. And if you go into the definition in the Jainism, that also is that's a physical complex of the mind. So it's almost akin to each other. Come to the Bhavaman. Psychologists know, not as a neurologist, but psychologists know that they are basically a psychological or cognitive functions. Bhavamans are usually the cognitive functions which are there. They are like thoughts, emotions, volitions, aligned with the what neuroscience calls it as a cognition or the affective one. Our weakest link is when soul has to be compared with the science. This is our weakest link. For this weakest link, Jainism, while posit consciousness as the intrinsic to the soul, neuroscience are searching for the neural correlate of the consciousness. That's what the neurology is now going into. So this is the where we are just going into the some
things. Now, before I come to the near end of my talk, I just thought of a model where the brain can be considered as a present one. And before going into the model, some of the actions are there that, again, revising it, it's a set of actions. It's like a software in a laptop, which is not visible but functional. Same thing, and brain is the hardware. Second, it works on the electromagnetic energy. That's why when Kachara Sahab said 20-watt bulb, that's the only energy which is needed for the brain to work. In fact, it is not only for the brain, it is for the brain and mind. The 20 watt is needed. The third is the law of universality. I just talked last time. And analog versus digital, I also talked. But what we immediately or urgently or, sorry, calculatively know that my body, if you look into this one, is a miniature universe. And each cell in the body is also a miniature body. Like you have got a mitochondria, Golgi apparatus, and all the things which are there in my body to take out the things, to take the oxygen, to take out the oxygen and the carbon dioxide, or water to in, water out. Everything which we have got in our my body is miniaturely it is present. So the miniature human body is a miniature universe. If you look into this one, the total, just one example, not many examples, more than 70% of my body is water. So also in the Earth planet. And possibly in the universe and the galaxies, it will be the same combination. Though one may say there will not be any water there, but I'm saying the uh, law or the working everywhere, the model is the same in the nature. And there is, as I said, there is a two-way communication. I already mentioned between cell organs and the mind. Two-way communication. Brain and mind, there is a two-way communication. Mind with the deals with the mind. It deals with the universe also. It has been said it acts as an antenna. It signals from the overall universe it gets and it produces the signals by itself also. So there are two-way communications. If you look into this one, on the other side of the diagram, the brain, mind, they are in the one complex and two-way link between the universe and the mind. That's what the model, perhaps on which we can research further and find out how can we can go into the further. These are some of the research potentials or the unanswered. There are plenty. I'll just named 5 or 6. All animals have some form of mental life as per the structure of their neural structure. Whatever the neural element is there, mind will be proportionate to them. But how and why they acquire this remains a mystery. How does consciousness arises from the different forms of the life? Are mind and matter connected through meaning or through the awareness? That's a big question there. Does a collective or global mind, which I proposed earlier, and it is there, not I have not proposed, it is already known to us that it is exist, but is it proved or not? And what are the harmful potentials for the collective psyche or mind? What we know as the war, the jihad. These are the common ones, which are the harmful effect of the collective psyche. What are the basis of the extrasensory perceptions? And do they have got a genetic link or they are limited only to the human beings? And the last one, can we transplant or replicate mind or mechanism of mind? So these are some of the questions. There are plenty of this one which are unanswered, and science is a progressive one. In that one, I think after 5 or 10 years, we will have got a better answer for many of these things. To conclude, mind is a subtle,
dynamic, and powerful phenomena. Though formless and intangible, it profoundly influences thought, emotions, behavior, and bodily functions. Both science and the philosophical traditions, including Jain Darshan, recognize the importance of this wonderful entity. Practices such as meditation, ethical living, spirituality, disciplined lifestyle can cultivate our greater mental stability and awareness. Jain philosophy provides a value based framework for inner transformation, while neuroscience offers complementary insight into the brain mechanism underlying these processes. Together, they open a promising path towards the deeper understanding of the brain mind complex and the pursuit of both mental well being and spiritual growth. Though there are few controversial points I have raised, which is away from the philosophy, but still, these are my personal thoughts. So I take your leave. Thanks a lot for the kind attention. Thank you very much, Dr. Sanchetee. You have given a very uh, elaborate speech on this brain and mind. And in fact, you have raised many new areas where people can do research so that Jainism and science can come together somehow. And as far as you have raised many questions in your last slide where we can do our research work, some of the interesting thing that you have mentioned is that instinct. About instinct, we have sufficient literature in our Jain text. It is instinct what we call is Sangya, Ahar, Vah, Maithun, and Parigrah. So these are the Sangya. So definitely they indicate that we have some neural activity there. So this is one thing. Another interesting thing that's universal mind and individual mind. Yes, it is also important. It can be thought of. We should work on this and many other areas you have raised in your speech. Really great idea, great. And I think you definitely take forward, as our Bhandari Saab always says, we should take some project on brain and mind. And too much work is going on in other world. So I think you are the appropriate person who can take this forward, projects for the students and young scholars. Thank you very much, Sanjeti Saab. So we have two small questions. Please, you can see the chat The, box also. And yes, I can. I think one is from the Dilip ji. Yeah. Uh, Yes. Dilip ji, Dilip you ji, want to tell something? Ji sir. Uh, Sir, you mentioned about that mind works on electromagnetic energy. Is there any role of non-electromagnetic energy which pervades whole of the universe, the dark sector? Or is there any hypothesis about that? What is the non-EM ka role in the functioning of mind? uh, as far as the non-EM energy source, it has not been established yet. It is thought of. It's a very good topic, but the proof is still not there. That though, as you rightly said, the black holes, there perhaps non. So right now we know very well is that either we are talking of the waves, we are talking of the particles, or we are talking of the energy. That's the way. Even in formation of the universe is because of the energy. But what form of energy? We know the electromagnetic waves. We know the radio frequency waves. But non-EM, still, I'm not very conversant whether the mind has been exploded with that one also. Okay, sir. Thank you. Thank you. Okay. So Sanyam has asked one question, what is the relation between soul, mind, and consciousness? So actually, we are into this only. We are discussing all the sessions. We will discuss on this in minute details. So I think uh, let us take some other question. Amal Chavare, what is your question?
texts, in Jain texts, it is very commonly written that the Dravyaman is shaped like a eight-petaled lotus and so on. Ashtadal Kamal is what we say. Now, how do we, and Bhavman is something very different. So, how do we reconcile this with the structure of brain that Dr. Sanchetee has proposed? Dravyaman, as I said, it's there that certain actions of, I just told you only one network, but there are plenty of networks in the brain which can be identified with the Dravyaman. That say when I'm doing some job or I'm acting on some impulse, there are actions which are there of the happiness, anger, sorrow, love, hate, all they are, as I said, there are SOPs written in my brain for that one. But whether uh, eight petals or the kamal, I'm not in the science. We are not recognized in that way. In the philosophy, yes, it has been recognized both in the Vedantic also and in the Jainism also. It has been recognized in that way. Regarding the Bhavman, we are still depending on the psychology. And the Bhavman, we are proposing or contemplating that it is an extension of the physical mind and not as a separate one, as Jainism has said, that it is an extension of the soul, or extension, it is immediately connected to the soul. That is we have not reached up to that extent. We have reached perhaps right now up to the physical mind. That is the where I can right now put my arguments on that one. But otherwise, they are the good hypothesis. And I must say, they are not good hypothesis. They are very good hypothesis that they are connected to the soul and soul has got that mechanism. But again, these are the propositions. Unfortunately, the facts or the documents are not there to support it. But they are very good. And if they are thought of, they are marvelous one. As I said, like you put it as a Pushpak Viman or the laser techniques in the war, that was there described in the Ramayana and the Mahabharata. But if they thought it that time, it's a very big achievement. And we must learn, the science should learn from the philosophy in that way. And in fact, I'm not saying learning from, philosophy must guide us, the science in that way. Thank you. We are having couple of more questions, but I request uh, all the persons who have raised these questions, please hold on. We will take them in the end of all the lectures, if time permits, because it is already 8:16. And now I will give a brief introduction of Dr. Subhash Jain. Thank you, sir, Dr. Sanchetee, sir. We will call you again. You are moderator. I am just giving the introduction of Dr. Subhash Jain, then you take over this. So, Dr. Subhash ji, let me introduce. He is our senior fellow in this group. Dr. Subhash Jain is PhD both in civil engineering and genealogy. It is interesting. He is a professor emeritus in University of Iowa. He has in-depth knowledge of Jain karma theory. He presented many lecture on the Karma doctrine. He has published several articles and authored 4 books. His topic today is significance of mind. So, Dr. Suvaji, and now this is over to Sancheti Saab. Suvaji, you go ahead. अनम्यूट अनम्यूट करना सुभाष को। सुभाष से अनम्यूट करिएगा सर। Okay, can you hear me? Yes, 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 sir. go ahead. Okay, let me go ahead and my शेयर करिएगा स्लाइड सर।
Okay, I have my slide. Okay, can you hear me? Yes, yes, sir. Okay. Slide is not visible, sir. Huh? Slide is not Slide visible, is sir. not visible. Your Oh voice boy. is. Yeah. Why is not visible? Oh, Go to slideshow, please. yeah, that's what I went to slideshow, but okay. You have to share on Zoom. Share. Where the share part is. Oh. It You is at the minimize bottom, this. sir. Now slideshow. Both That icons. is Not not visible. visible. This my. You see, I clicked on share. Okay, add people group of, maybe I should put jazz. I don't know. No, where chat is written, sir, chat and the question answer box, there it is a sharing screen, sir. In that, Is it working? no, sir. Can you see No, it? so I propose that you send your slides to Purvi ji. She will show. In the meantime, we will take up Aditya ji. Okay, okay, I will send my slide to Purviji. Okay. Okay. So let me give a brief introduction of Aditya ji. And in the meantime, Purvi ji will help Subhash ji. So Aditya Jain, let me give a brief introduction. Uh, he is the youngest chap in our group, and really I am happy that JS is always trying to bring young people in our forum. And not only this, we will decide on this also that if young people are coming, we should encourage and we should give uh, something to encourage them again. So let me introduce Mr. Adit Vaibhav is doing his graduation from University of Rajasthan. He has good knowledge of Sanskrit, English, Hindi, along with Jainism. His topic is concept of brain and mind in Jain philosophy. So now this forum is for Adit. Please show your presentation. And your time is limited as we discussed you. So keep in mind that short presentation is there. Okay. Am I audible? Yes, मेरी yes. आवाज आ रही है? Okay. Thank you, Mr. Anil Jain, for that introduction. I am the youngest presenter here, and it is truly an honor for me to present between so many scholars what I have written, what I have researched at such a young age as well. It is an honor from my side as well. So I'll get on with my topic. Vitragaya Namah, Jai Jinendra to everybody. I will start sharing also. Please raise your voice little bit. Yeah. Okay, okay. Is my screen visible? I think, yes, knowledge as the Yes, it nature is. of soul. Okay. Okay. My topic is knowledge as the nature of soul, or Gyan as the true and only nature of soul. Now, Jain philosophy, it accepts or it states that knowledge is the only nature of soul. Like, you cannot separate knowledge and soul. The only function of soul, along with many others, is that it constantly gains or collects in information, no matter in which state you are in, or even if you are a human right now, or you become an animal, or according to Jainism, you go to Tiryan's Gati, or you obtain the smallest possible
jiva or the body of the smallest possible jiva, even then you will do one thing, and that is gain information or gain knowledge, no matter how small that knowledge is, or no matter how big your knowledge right now is. So that is an inherent quality of the soul. It cannot be separated from it. And that is my topic for today. My topic also gains its information from this because it is the basis of Jainism. Like we are talking about knowledge and how this particular jeev is able to gain in knowledge. Right now, we are able to understand things. You are able to hear me. You are able to see this PPT. You are able to feel your surroundings. So how is this possible? And how is your brain or how is your soul constantly processing this information? That is the basis of my topic as well. So I'll get on with it. Now, उपयोग लक्षणम तत्वा सूत्र fourth sutra second adhyay Acharya Uma Swami states that the nature of the soul is to know and only know. There are other qualities as well, but today we are talking about upyog. Upyog as in its ability to gain in information. Now, upyog means other things as well. Like you can see the chart below. Upyog has three bases: shubh upyog, ashubh upyog, and shuddha upyog. But that's something we'll get back to afterwards. Right now, upyogo lakshanam basically means that the nature of soul is to gain information or is to know or is to constantly keep on knowing something. So we talk about our Sarvagya Bhagwan, we talk about our God. He is Keval Gyani or he is all knowing. So how is that he is all knowing? Because it's the nature of our soul to know everything, and it has the capability to know each and everything as well. Right now, we don't have that capability. We'll discuss that as well because each and every person right now has a different capability, has a different method of gaining information. So, how does Jainism explain that? We'll get back to that as well. But when we are talking about Sarvagya Bhagwan, he has the capability to know everything, to keep in everything, and to give out everything. So, we have Sarvagyata and we have Hitopdeshita as their gun as well. So where do these come from? These come from Upyogo Lakshanam, that the nature of soul is to know. Like the nature of water, the nature of water is to remain at a cool temperature. Sheetalta is known as the nature of water. So no matter how warm how much you boil that water, or how cool you make that water, it will eventually return to its own nature. That is Sheetalta or at a very cool temperature. So just like that, we have a soul as well. No matter how less of a knowledge we have right now, no matter how much we gain afterwards, at the end, it's the nature of soul to keep on knowing, to keep on gaining information. Now, in Jain philosophy, we have two ways of knowing, which is one, Praman Jnana, and two, Naya Jnana. Praman Gyan is knowing everything, true and complete knowledge of everything. Everything, as in, even if you're not taking everything, you can take one thing to understand right now. So, if you have heard that example of an elephant, we have four blind people. They're touching the elephant at different parts. So one of them touches the leg, one of them touches the tail, one of them touches its body. So all three of them think they are touching something different. The blind person who's touching the leg, he thinks that he's touching a very big pillar. The one who is touching the tail, he thinks he's touching a snake. The one who is touching the body, he thinks he's touching the wall. So are all three of them wrong? You cannot say they are wrong because they are again uh, describing what they are feeling. So in a way, they are right. But when you know that object this they are collectively touching is an elephant, that is called Praman Jnana. And what they are experiencing is called Naya Jnana. So Naya Jnana is not false Jnana or false knowledge. It is little knowledge or a part of the complete image, as we can put it, a small part of what's actually complete. So Praman Jnana is complete knowledge of any object. So you knowing that there is a big elephant, that is Praman Jnana. And Nyaya Jnana is
them touching and describing other objects as if they don't know the elephant is actually there. So this is the difference. Neither of them are false. They become false. Nay Jnana becomes false when they only believe that one thing. So when they acquire ekant jnana, that is the blind person only believes that he's touching a snake. He does not accept the fact that it could be something else as well. That becomes false knowledge. But Nay Jnana is Ekdesh Jnana of any object, and that is incomplete knowledge. It is not false, but it is incomplete. And that is what we have right now. We often look at objects, we often gain information through Nay Jnana. Praman Jnana is with our Sarvakya, up God, Bhagwan, who is Keval Jnani or who has Sarvakita as his gun, he has Praman Jnana. Why? Because he knows everything from every aspect, from every place, time, or any other way you can imagine. He knows it. He is the true bearer of complete knowledge. But what we know right now is incomplete knowledge. So whatever we see right now, whatever we hear right now, whatever we feel, that is incomplete, not a part, not truly what we can experience, not truly what we can gain. Now, the sources of knowledge. Jainism divides these sources or these mediums of knowledge into five parts. These are not something out of the ordinary or different. These are different sources in which a jeev can gain his or her information. So we have two, Mati Gyan and Shrut Gyan, and then we पूर्वी have जी आपको Abdi मेरी Gyan, स्लाइड मिल गई? हाँ, स्लाइड मिल गई आपको? we have Abdi Gyan, Manhaparya Gyan, and Keval Gyan. And as you can already see, these are divided into two parts. So Mati and Shrut Gyan are different, and Abdi, Manhaparya Gyan, and Keval Gyan are in a different category. These are not different. That is why you can see Gyan word is common in all five because these are Gyan, with the most highest form being Keval Gyan. And below them are Abdi Manapare Gyan, and even below them are Mati Shrut Gyan. And Mati Shrut Gyan are something what we have right now, which are called as Paroksh Gyan. Avdi Gyan, Manapare Gyan, and Keval Gyan are called as Pratyaksh Gyan. So what we have right now are these two Gyans, Mati Gyan and Shrut Gyan, which is Paroksh Gyan. So what is Paroksh and Pratyaksh? We heard about Praman Gyan, Praman which is true and complete knowledge. That has two bifurcations. We have Paroksh and we have Pratyaksh. Paroksh Gyan is something that depends on your senses, your indriya. So your feeling, your touch, your eyes, your tongue, your hearing capability, any source of information that you are gaining right now through these senses is called Paroksh Gyan, which is Mati and Shrut. So in that definition as well, we can see इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा पदार्थों को जानना, which means with the help of your senses and your man, you are gaining information. And pratyaksh gyan is a level ahead of this. It is without the dependency of any indriyas or any man, any senses. So whatever knowledge of the manapara and keval gyan uh, collect in, it is without the dependency on any senses. So, Abdi Gyani Vyakti, a person who has Abdi Gyan, he is able to gain information without the uses of his eyes or his feel. He can just collect in information. Mana Pare Gyan and Keval Gyan is so without the use of your senses, God is able to collect in everything or gain everything or see everything. We often say stuff like God is all knowing. So, how is he able to know everything? That is because his knowledge has become independent without the dependency on his eyes, without the dependency of his senses. So, right now, his knowledge is at its most peak power. And below that are we who are dependent on our eyes to see, who are dependent on our ears to hear. So whatever happens with our eyes, we need spectacles to see, to help us see, because we are dependent on these. And that is why our knowledge or our gyan is far below the level of what Sarvagya Bhagavan has.
Mati Shuddh Gyan is our main topic of discussion today. So, what is Mati and Shuddh Gyan? A present way to gain knowledge. We use our senses to gain knowledge in everyday areas. It is non-independent, which means it depends on your senses. Whenever one of your senses weakens, you are now lacking in information because of that sense. If you weren't dependent on your eyes, we could see a whole lot better. If you weren't dependent on your ears to hear or your touch to feel something, you would gain information more rapidly. It is even evident. For example, if you are using a spec, for example, we all use specs. So if a person who is dependent on his specs, he needs to carry that everywhere to look or to see or to, kind of have a very good vision somewhere. Anytime he's without his specs, he's in trouble. He has blurry vision. He cannot make out this things from a distance. So right now he is very much dependent on that one specs to help him see stuff. That is our present condition, but with our eyes, with our touch, with our other senses as well. So right now we are not independent to gain information, but yet we gain information every time. It is sequential, meaning it knows things sequentially through the senses. So touch, hearing, and breathing, and all this kind of the knowledge you gain through your senses, these come in a sequential order. So first you feel, and then you kind of think. You can see stuff, you can hear stuff. So it goes through your mind, and then you process that information, and then you get the result. Momentary. It is momentary because it is chayoshan. What is momentary? It is very small. It is for a moment. So sometimes we mix up information. Sometimes we forget information. Sometimes we forget names. We forget numbers. We forget to do stuff. Why is that? Because our knowledge right now is momentary. It is chayoshamik gyan, which is the lowest of our knowledge capabilities. So that is why we end up forgetting things, we end up mixing things, which shouldn't be the case. But since we are so dependent, it happens with us. Actually, Mr. Matigan, Aditya, Mr. Aditya, please conclude. okay, I'll just conclude. I have just a couple more points as well. Uh, we have five senses and one which make up for the for Matigan. So Matigan has other bifurcations as well. You have the opinion, you have co-memorization, knowledge in the form of addition, argument, and logical inference. These are all part of Matigan as well. And Matigan is further bifurcated into Avagraha, Iha, Avai, and Dharana, which is also the order in which you know stuff. So first you know, then you have the wish or desire to know more about that, then you make a decision, and then it goes into dharana, which is why you're not able to forget some stuff on which you have thought along. So things we think about continuously, those are things we are not able to forget easily. But things that just slip by through us every day, which is only a part of Avagre or Iha, we tend to forget them 90% of the time. Other gyan was Shuddh Gyan. So we did Mati Gyan, we have Shuddh Gyan, Shrutam Mati Purvam, Dvayaneka Dwadash Pedam, again a sutra from Tattva Sutra. It is knowledge of other objects by relying on the object through intellect. What is intellect? So that is Mati Gyan. Whatever you gained from Mati Gyan, you now are able to further that knowledge by Shuddh Gyan. And returning back Mr. to our Aditya, first, Mr. Aditya, Yes. we have got a very this is short my time. last point. This is my last But, point. I'm really sorry no, for I taking think your time. you must give a last comment, 1 minute. This is So my yes. last point. I'll just end it right now. We return back to our main topic, which is from Upyog. So Jeev has three types of Upyog, which is Shubh Upyog, Ashubh Upyog, and Shuddha Upyog. And through right faith, we are then able to go through right knowledge, and our indriyas or our senses are able to be ये तो पहले ही guided बता दिया into भाई. what should be. नहीं पहले नहीं बताया था, but these are then guided through right faith, which is what Jainism calls samyak darshan. So right now in mithya gyan we are not able to have the right direction of our knowledge, but through shubhopyog and then shuddhopyog we are then able to have that.
ये माइक आपका, रमेश जी और प्रताप जी, आपके माइक बंद हैं। ओके, thank you very much, Aditya, for your speech. But you should stress more on this mind. That would be have been better. Definitely, you will come well prepared next time on the topic. Thank you very much. Uh, Pratap ji, Sanchetee नहीं, साहब. आप सुभाष जी से चालू करिए। हाँ भैया, मैं आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी ओके, मुझे पूर्वी जी ने बताया पहले शेयर करो, और शेयर करके आप वो फाइल सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे डेस्कटॉप पे आपने ओपन किया ना अभी। नहीं, शेयर तो वो फिर वही प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि शेयर करने के बाद ठीक है, आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। नहीं, एक सेकंड, फिर मैं एक सेकंड। ओके ओके। मैं शेयर करके मेरी स्लाइड नहीं आई वहां पे। नहीं, स्लाइड्स आपको वो साइड में विंडो में दिखाई देगी, डेस्कटॉप पे है वो, दैट यू हैव टू सिलेक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको रुको, पहले नहीं, वो उसमें नहीं आ रही ना उसमें। हाँ तो क्यों नहीं आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। ओके, इज इट विजिबल? जी ये एक अब आई क्या? देखिए स्लाइड। नहीं, आप भी करेंगे, मैं भी कर रही हूँ। नहीं नहीं, अभी मेरी आ गई क्या? नहीं, राइट तो अभी आई किसी थी, की नहीं दिख रही है। नहीं, राइट तो आई थी। आप रहने दीजिए सर, मैं कर रही हूँ। ओके, ठीक ठीक, यस ओके, यस। ओके। आप सर स्लाइड चेंज करनी है तब मेरे को नेक्स्ट बोलना, तब मैं कर दूंगी। नहीं, मैं नहीं कर सकता? अच्छा, नहीं, अब आप नहीं कर सकते, आई हैव ऑलरेडी डन। ओके। ओके, आप देख सकते हैं कि मेरा टॉपिक है मन का महत्व। नेक्स्ट नेक्स्ट। यस। ओके, मैं अपना प्रेजेंटेशन है एक स्लोगन, एक नारे के साथ शुरू करूंगा। नारा जो होता है एक वन लाइनर होता है, और आजकल इस युग में वन लाइनर का युग, मैं इसको वन लाइनर का युग कहता हूँ। तो इस वन लाइनर के युग में एक लाइन वन लाइनर तो मेरी भी चलती है, तो मैं कोशिश करूंगा एक लाइनर देने की। वन लाइनर का क्या फायदा एक है, जरूर है। वन लाइनर में यह है कि याद रहने की संभावना ज्यादा है। मुझे पता नहीं जब मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होगा कितना आपको याद रहेगा, लेकिन चांस है कि शायद वन लाइनर याद रह जाए। तो अगर वो वन लाइन याद रह गई मेरी वन लाइनर आप, तो मैं सोचूंगा कि ये वन लाइनर की कामयाबी है। अगर याद नहीं रही तो मैं समझूंगा कि मुझे वन लाइन लिखनी नहीं आती, क्योंकि इसके मायने अब याद रहना चाहिए। वन लाइनर तो याद रहती है, तो मुझे एनीवे तो मैं वन लाइन के साथ शुरू करूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एक मिनट, नहीं हो रही है, एक मिनट। नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहे भाई? नेक्स्ट आप स्लोगन बोलिए जब तक सर, है। सर ओके, मैंने जब तक स्लोगन बोलिए। सर चलिए, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, मैं अपना नारा बताता हूँ। नारा है, जैन दर्शन को दर्शन ही रहने दो। जैन दर्शन को दर्शन ही रहने दो, उसे भौतिकता सीमित विज्ञान में बदलने की कोशिश मत करो। उसे भौतिकता सीमित विज्ञान में बदलने की कोशिश मत करो। विज्ञान में भौतिक जगत के बाहर जाने की ताकत नहीं है, वो भौतिक जगत के बाहर नहीं जा सकता।
और दर्शन डेफिनेटली भौतिक जगत के बाहर जा सकता है। तो हम गड़बड़ ये कर रहे हैं कि अभौतिक जगत को भौतिक जगत लाने की कोशिश करते हैं, जो नामुमकिन है। लेकिन एनीवे, मेरा नारा यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि दर्शन को विज्ञान में बदल दें, जो मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी बात नहीं है। ओके, या नेक्स्ट। हाँ, ओके, नेक्स्ट। ओके, जैन दर्शन और विज्ञान दोनों के निष्कर्ष भिन्न भिन्न मान्यताओं पर आधारित है। हम जानते हैं कि जैन दर्शन की मान्यता अलग है और विज्ञान की मान्यता अलग है। नेक्स्ट। नेक्स्ट, या ओके, जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स यानी जैस का उद्देश्य इन मान्यताओं की बीच की दूरी कम करना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जैन दर्शन की मान्यताएं हैं या विज्ञान की मान्यताएं हैं, उनकी दूरी को कम किया जाए। और ये दूरी दो तरह से कम की जा सकती है, एक विज्ञान की मान्यताओं को बदलकर और एक जैन धर्म की मान्यताओं को बदलकर। नेक्स्ट। नेक्स्ट, या जैन दर्शन की मान्यताओं को बदलना किफायती लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसमें रिसर्च करने में कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं अगर जैन दर्शन की जो मान्यता है उनको विज्ञान की मान्यताओं में बदल दो। नेक्स्ट। और विज्ञान की मान्यताओं को बदलना महंगा। तो ये लगता है कि क्योंकि विज्ञान की मान्यता को जैन दर्शन की मान्यता में बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, तो ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है तो यही करते हैं, चलो भाई, अगर हम एक इधर नहीं कर सकते तो जैन की मान्यताओं को विज्ञान की मान्यताओं से जोड़ दो। मुझे भंडारी साहब के प्रेजेंटेशन से जो उन्होंने पिछले सप्ताह दिया था, ऐसा लगा कि वो चेतना को भौतिक मानना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के चक्कर में कि भाई जो चेतना जो है भौतिक मान लेना चाहिए, जिसका अर्थ है जैन दर्शन का गला घोटना। तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, जिस रोज चेतना भौतिक बन जाएगी जैन दर्शन खत्म, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कुछ मायने रहेगा ही नहीं, और जो मुझे स्वीकार नहीं है। हमारी ये सोच कि केवल जैन दर्शन को विज्ञान से सीखना है और विज्ञान को जैन दर्शन से कुछ भी नहीं सीखना, ठीक नहीं है। स्लाइड क्या हुई भाई? बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है, मैं बोलता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? भाई आपकी आवाज आ रही है, ठीक वीडियो ठीक नहीं आ ठीक। रहा आपका। स्लाइड आ रही है वीडियो आवाज आ रही है आपकी, और स्लाइड नहीं आ रही? स्लाइड आ तो रही है, है वो सामने। पूर्वी जी दिखा रही है ना। हाँ पूर्वी जी ठीक है। पूरी स्लाइड खोल ओ दीजिए। ठीक, हाँ स्लाइड खोल दीजिए। पूरी विज्ञान मतलब का सारी लाइनें माइंड और ले जैन लीजिए। दर्शन का माइंड
मन दो भिन्न भिन्न इकाई है। हाँ, विज्ञान का माइंड और जैन दर्शन का मन दो भिन्न इकाई हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। विज्ञान के माइंड का संबंध चेतना से है, कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, जो आत्मा का गुण है। और जैन दर्शन के मन का संबंध प्राणों से है। मन विकसित प्राणी का 10वां प्राण है। हमें अगर याद हो, 10 प्राण में प्राण सबसे अंतिम में आता है, 5 इंद्रियों के बाद और दोनों बल के बाद। ये तो जो पुद्गल है, तो प्राण जो है ये पुद्गल है, इंद्रियां और मन जो है पुद्गल है। नेक्स्ट नेक्स्ट। संसारी आत्मा को भौतिक विषयों के ज्ञान के लिए इंद्रियों की सहायता और चिंतन मनन के लिए मन की सहायता की जरूरत होती है। और ये दोनों इंद्रियां और मन पुद्गल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की सहायता चाहिए आत्मा को, संसारी आत्मा को, लेकिन ये इंद्रियां और मन पुद्गल है। नेक्स्ट। विषयों का ज्ञान और चिंतन मनन संसारी आत्मा करती है। भाव इंद्रियां और भाव मन केवल समझाने के लिए यूज किया जाता है। कोई भाव मन और भाव इंद्रियां होती नहीं है, ये तो एक समझाने के लिए यूज किया जाता है। और जो देखती है, चिंतन करती है, वो संसारी आत्मा होती है। नेक्स्ट। ओके, या तो इसमें नहीं, पीछे वही बैक थोड़ा सा पीछे बैक जाइए। हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स के युग से पहले चेतना शोध का विषय नहीं था। कोई चेतना की बात नहीं कर रहा था। आपको पता था कि सभी वैज्ञानिक चेतना को मेटाफिजिकल मानते थे, सब के सब। नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट। यार, मैं शेयर करना आना चाहिए मुझे, यार समझ ही नहीं आ रहा क्यों, क्या मैं शेयर क्यों नहीं कर पा रहा। मैं एक दफा शेयर करके ट्राई करके देखूं। भैया ओके। अब क्वांटम मैकेनिक्स और एआई के युग में दो वैज्ञानिक गुट हैं। एक गुट चेतना को पुद्गल का गुण मानता है और उस पुद्गल को माइंड कहता है। तो एक ग्रुप तो कॉन्शियसनेस जिस चीज में है उसको माइंड कहता है, वो कहता है माइंड मैटर है। दूसरा गुट चेतना को अभौतिक द्रव्य का गुण मानता है और उस अभौतिक द्रव्य को सोल कहता है। अब वो सोल, क्योंकि उनको पेपर पब्लिश करने पड़ते हैं, फंड लेने होते हैं, तो वो लोग सोल पसंद नहीं करते हैं, तो उन्होंने भी कहा भाई माइंड ही कह लो उसको भी। तो वो गुट भी सोल को माइंड कहता है। तो माइंड वैज्ञानिक युग में दो तरह का है, एक माइंड पुद्गल है और एक माइंड जो है मेटाफिजिकल है। तो दोनों ग्रुप हैं। तो कार्ल जुंग ने मेंटल की जगह, ये जो मेंटल जो हम मानसिक कहते हैं, उसने साइकिक शब्द यूज किया था। और उसका कोई कारण रहा होगा, उसे मेंटल पसंद नहीं आया, तो उसे लगा कि शायद माइंड जो है ये मैटर की तरफ जा रहा है और साइकिक वो मेटाफिजिकल सोचता था, तो उसको भी लगता था ये माइंड को मैटर की तरफ जाना शायद ठीक नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, इन दो गुटों का नहीं, पीछे मेरे शायद हमने
ओके, हाँ ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स और एआई, ओके नेक्स्ट, या इन दो गुटों का कारण एआई है, जिसका जीवन काल खाली 3-4 दशक है और जो क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है। तो एआई, क्योंकि जब से क्वांटम मैकेनिक्स आई तो एआई बहुत प्रचलित हो गई। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों को शोध करने के लिए आर्थिक सहायता चाहिए। मैं भी रहा हूं साइंस में, और मुझे भी अगर प्रमोशन चाहिए तो पब्लिश करना पड़ेगा तो मुझे डेफिनेटली ग्रांट लानी पड़ेगी। तो वैज्ञानिकों को शोध करने के लिए आर्थिक सहायता चाहिए। नेक्स्ट, एआई और क्वांटम मैकेनिक्स विषयों पर शोध करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों आर्थिक सहायता की कोई कमी नहीं है। इतना पैसा है एआई वालों के पास कि आप अगर एआई पे काम करेंगे तो आपको कोई फंड की कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों का पहला गुट जो क्वांटम मैकेनिक्स को चेतना का आधार मानता है, उनके पास आर्थिक सहायता की कोई कमी नहीं है। इतना पैसा है कि वो अप्लाई करें, फट से ग्रांट मिल जाती है। नेक्स्ट, उनके पास के वैज्ञानिकों का दूसरा गुट जो अभौतिक द्रव्य की को चेतना का आधार मानता है और पुनर्जन्म पर शोध करता है, उसके पास आर्थिक सहायता की काफी कमी है। और इस ग्रुप में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के वैज्ञानिक भी हैं। वो बहुत ट्राई कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से रीइंकार्नेशन पे ग्रांट मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा बहुत फंड दे देती है। वैज्ञानिकों का दिल चेतना को भौतिक मानता है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उनका दिल क्या कह रहा है, अगर दिमाग कह रहा है कि भाई पैसा मांगते हैं तो वो कहना शुरू करेंगे हाँ भाई चेतना भौतिक है, लेकिन उनका दिल भी अब भी वो मानता है कि चेतना जो अभौतिक है। पहले गुट का दिमाग माया से अधिक ग्रस्त है। मैं ये कहता हूं कि ये जो दिल और दिमाग का झगड़ा है, ये माया का झगड़ा है। तो पहले गुट का दिमाग माया से ग्रस्त है, पर उनका दिल चेतना को मेटाफिजिकल मानता है। नेक्स्ट, दूसरे गुट का दिमाग भी माया से कम ग्रस्त है, उनका भी थोड़ा उनको भी पैसा चाहिए, माया से कम ग्रस्त है, पर उनका दिल भी चेतना को मेटाफिजिकल मानता है। तो मजे की बात यह है कि एक का दिमाग माइंड की बात करता है, एक का दिमाग सोल की बात करता है, पर दोनों का दिल जो है वो सोल की बात करता है। नेक्स्ट, जैस के सदस्य भी दो गुटों में, मेरा मानना है कि हम भी दो गुटों में विभाजित हैं। एक गुट का दिमाग अधिक माया से ग्रस्त है, जो माया उसको चेतना को भौतिक बनाना चाहते हैं, और दूसरे गुट का दिमाग कम माया से ग्रस्त है, और पर दोनों गुट जो है उनका दिल जो है मेरे ख्याल में चेतना को मेटाफिजिकल मानता है। नेक्स्ट, मेरा मानना है कि आइंस्टाइन बहुत बड़ा, आपको सबको पता है कि वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। आइंस्टाइन का एक दिल भी चेतना को मेटाफिजिकल मानता था। अगर कभी आपने उसके लेक्चर सुने हो, बात सुनी हो, वो चेतना को डेफिनेटली मेटाफिजिकल मानता था। ओके, मेरा अभिप्राय को समझने के लिए माया शब्द का अर्थ समझना होगा। माया शब्द का अर्थ है बाहर में कुछ और अंदर में कुछ। ये
तत्वार सूत्र में उमा स्वामी ने माया की डेफिनेशन दी है, और वो बताते हैं कि माया जो है ये पशु पक्षियों के तरह होती है, उनके मन में कुछ होता, दिमाग में कुछ और होता है और मन में कुछ होता है, तो उसको ये माया कहते हैं। यानी ब्रेन और माइंड का द्वंद जो आज का विषय है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं ब्रेन एंड माइंड की, ये द्वंद है, क्योंकि दिमाग, ब्रेन कुछ और कहेगा और दिल कुछ और कहेगा। नेक्स्ट। जैन दर्शन वाला मन, जिसे दिल भी कहा जा सकता है, जो दिगंबर संप्रदाय के अनुसार मन का स्थान है। तो क्योंकि जैन संप्रदाय में यह है कि मन लोकेटेड जो है वो दिल में है, तो हम मन को दिल से भी कह सकते हैं। तो बजाय इसके कि मन, दिमाग और मन की लड़ाई है, दिमाग और दिल की लड़ाई भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट। ये जो लड़ाई है दिल की और दिमाग की, ये जो एक टर्म है हमारे यहाँ मोह, ये मोह, जिसको ईगो बहुत बढ़िया शब्द नहीं है, पर बहुत इसका ट्रांसलेशन ईगो ही किया जाता है। ये मोह का खेल है, और मोह एक टेक्निकल टर्म है जिसका अर्थ है मिथ्यात कम कषाय कम नौ कषाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेफिनेशन मोह की बहुत कम जगह मिलेगी, खाली एक धवला में मिलेगी। जितने जितने बुक्स हैं और शास्त्र हैं, सब में कषाय पे ज्यादा जोर दिया गया है। तो मोहिनी कर्म मानते हैं कि मोहिनी कर्म सबसे स्ट्रांग है, और मोहिनी कर्म में मिथ्यात्व होता है, कषाय नौ कषाय ये सब कुछ होती है, पर हम कषाय पे ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमें जब टेक्निकल टर्म यूज की जाए तो उसको टेक्निकल टर्म की तरह से यूज किया जाए, बजाय उसको कषाय कहा जाए। नेक्स्ट। हम में से कौन अधिक माया और मोगों से ग्रस्त है? ये मेरी आत्मा का मतलब विज्ञान वालों का माइंड, क्योंकि विज्ञान वाल तो मेरी आत्मा या विज्ञान वालों का माइंड का कार्य नहीं है, उसका कार्य ज्ञाता दृष्टा है। आत्मा का हमें पता है जो होती है वो ज्ञाता दृष्टा होती है, दूसरों को जज करना नहीं है। तो मैं ये तो नहीं बता सकता कि हमारे ग्रुप में कौन माया में ज्यादा ग्रस्त है, किसकी माया ज्यादा है, किसकी कम है। और एनीवे हम सबको अपने अंदर झांक कर अपने मोह की गहनता को जानना होगा। उसका कोई और इलाज नहीं, सबको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई क्या और मोह को नियंत्रण करने के लिए कर्म फल को समझना होगा। नेक्स्ट। मैं ये जब कर्म फल की बात कर रहा हूं तो मैं अपने विषय से थोड़ा सा भटक रहा हूं, क्योंकि विषय है ब्रेन एंड माइंड। तो लेकिन मेरा ख्याल यह है कि इससे आप जो है जैश को अपनी दिशा, शोध की दिशा चुनने में थोड़ी मदद मिलेगी। तो मैं करीब 4-5 मिनट कर्म फल पे डिवोट करूंगा। ओके। तो कर्म फल जो है, कर्म फल केवल उदय में आने वाले कर्मों पर निर्भर नहीं करता। सबको पता भाई कर्म है जो उदय में आएंगे फल देंगे, तो ये मानते भाई ये कर्मों का फल है तो इसमें कर्म ही खाली फल देते होंगे। ऐसा नहीं है, कर्म के साथ साथ मीन्स ऑफ एक्शन, जिन्हें हम निमित्त कहते हैं, ये उस पर भी कर्म फल जो है मीन्स ऑफ एक्शन पर भी निर्भर करता है। तो जो कर्म फल है, जो बंधे हुए उदय में जो कर्म आ रहे हैं वो फल देंगे, और साथ में जो हम मीन्स ऑफ एक्शन जो अपनी फ्री विल से चुनते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। नेक्स्ट। हम निमित्त जो है अपनी फ्री विल से चुनते हैं, और इसे हम एक एग्जाम्पल, उदाहरण से समझा सकता हूं। नेक्स्ट। अब तो आप जो है इस समय मेरे कथन सुनने का एक्शन कर रहे हैं।
क्योंकि हम वी डू एक्शन ऑल द टाइम, तो आप इस वक्त सुनने का, मेरे प्रेजेंटेशन को सुनने का एक्शन कर रहे हैं, और उदय में आने वाले ज्ञान कर्म के फल आपके ज्ञान की पर्याय में परिवर्तन हो रहा है। तो कर्म फल जो है परिवर्तन दे रहा है, जिसमें मेरा कथन निमित्त है। तो मेरा कथन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब मान लिया आप सुन रहे हैं और आपका मोबाइल रिंग बजना शुरू हो जाता है, तो आपका मोबाइल रिंग करता है, आप अपनी फ्री विल से मोबाइल पर बात करते हैं। अब मोबाइल पर बात करना आपका एक्शन है, अब एक्शन बदल गया, आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं और वो आपका एक्शन है, और मोबाइल पर बात सुनना निमित्त है। निमित्त बदल गया, निमित्त जो है, जो मोबाइल पर आप बात कर रहे हैं वो निमित्त बन गया। तो निमित्त बदलते ही कर्म फल बदल जाएगा। तो जो ज्ञानामरणी कर्म का फल जो मेरी स्पीच को सुन के आप मिल रहा था, अब ये जो है वो कर्म फल ज्ञानामरणी कर्म जो उदय में आएगा, वो फल फर्क आएगा। अगर वो आपका मान लिया स्टॉक की बात कर रहा है कोई, तुम्हारी श्रीमती जी का फोन आ गया कि भाई मेरे स्टॉक के बहुत दाम बढ़ गए, तो जो ज्ञानावकरणी कर्म का जो परिवर्तन होगा, वो फर्क होगा जो मेरे कथन के सुनने से। तो मीन्स ऑफ एक्शन जो है, निमित्त बहुत इंपॉर्टेंट, निमित्त के बदलते ही कर्म फल बदल जाता है। अब जैसे ही तुमने मोबाइल फोन उठाया, सब कर्म फल बदल गया। अच्छा, मैं खाली 11 कर्म की बात कर रहा हूं, पर साथ में सारे कर्म फल दे रहे हैं, तो मोहिनीय कर्म का भी फल बदलेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि 11 के साथ में जो परिवर्तन होगा, मोहिनीय कर्म का भी परिवर्तन होता रहता है। तो एक निमित्त अगर अच्छा निमित्त है, अगर मोह कम बंधा तो निमित्त अच्छा है। तो हो सकता है भाई मेरा कथन अगर थोड़ा सा आध्यात्मिक है, तो हो सकता है मोह कम हो, और मोबाइल पे स्टॉक की बात, उससे राग द्वेष मोह ज्यादा जाग गया, तो उसमें शायद मोह ज्यादा हो, तो वो निमित्त उतना अच्छा नहीं हो। तो मैं निमित्त को अच्छा बुरा बताता हूँ, और अच्छा बुरा निमित्त में इस तरह से बताता हूँ कि जो निमित्त मोह कम करता है वो अच्छा निमित्त, और जो मोह को बढ़ाता है वो बुरा निमित्त। तो ये मैं यहाँ पे मैंने लिखा है। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, जिस निमित्त से मोह कम होता है वह निमित्त अच्छा निमित्त है, और जिस निमित्त से मोह अधिक होता है वह निमित्त बुरा है। नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि निमित्त के बदलने से बनने वाले कर्मों पर भी असर पड़ता है, क्योंकि अच्छा निमित्त होगा तो अच्छे कर्म बनेंगे, और बुरा निमित्त होगा तो बुरे कर्म बनेंगे। तो अगर मोह कम हो गया तो जो बदलने वाले कर्म है वो भी अच्छे होंगे, उनका मोह कम होगा और नेचुरली अच्छे माने जाएंगे। तो अच्छे बुरे कर्म जो होते हैं वो खाली मोह की तीव्रता पर निर्भर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोह जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जैन धर्म में, जिसको हम मिथ्यात्व कषाय और नौ कषाय कहते हैं। इससे सारी चीज गवर्न होती है, और मोह कम हो गया तो सब बस, तो और कुछ करना ही नहीं है, मोह को कम करना है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट। ओके, तो एनफ फॉर कर्म फल क्योंकि मैं अपने टॉपिक से बाहर चला गया था, तो अब मैं आता हूं फिर टॉपिक पे। इंपॉर्टेंट चीज है कि जैन धर्म में प्रकृति में संगी और असंगी जीव हैं जैन धर्म के हिसाब से, जिससे यह पता चलता है कि इंद्रियों और मन में क्रमबद्धता है। और इंपॉर्टेंट चीज है जिसे विज्ञान स्वीकार नहीं करता, विज्ञान में कहीं भी संगी असंगी नाम की कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। विज्ञान 5 इंद्रियों से परे किसी और क्वासाई सेंस के विकास को नहीं मानता। वो कहता भाई एवोल्यूशन का जो एवोल्यूशन, उसमें 5 सेंसेस तो हैं, पर 5 सेंस के बाद कोई और चीज इन्वॉल्व हुई जो जैन धर्म में मन विकसित हुआ, जो संगी और असंगी का फेल है। तो
विज्ञान नहीं मानता, विज्ञान जैन धर्म के मन को मानता ही नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। इसलिए वैज्ञानिकों की फाइंडिंग्स में कभी मन, संगी और असंगी जीव का जिक्र नहीं मिलेगा। कोई आर्टिकल साइंटिस्ट का पढ़ लो, ये 3 वर्ड मिलेंगे नहीं। इतना तो जरूर है कि अगर उन्होंने कोई रिव्यू सेक्शन में इंडियन फिलॉसफी का कुछ रिव्यू किया तो रिव्यू सेक्शन में ये मेंशन कर दे वो जैन धर्म में संगी असंगी जीव होते हैं, पर उससे ये मतलब नहीं कि वो साइंस मान रही है, वो तो खाली रिव्यू सेक्शन में, और वो भी बहुत कम। तो मेरा कहना यह है कि साइंस जो है बिल्कुल, जो एवोल्यूशन है उनका, बिल्कुल उस एवोल्यूशन में मन का कोई स्थान है ही नहीं। नेक्स्ट। जैन दर्शन का मानना है कि शुद्ध आत्मा को अनंत ज्ञान होने के कारण चिंतन मनन करने की आवश्यकता नहीं है, और चिंतन मनन नहीं करना तो मन की सहायता की आवश्यकता है। तो शुद्ध आत्मा के साथ मन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। केवल संसारी आत्मा को अल्प ज्ञान के कारण संसार से मुक्ति पाने के लिए चिंतन मनन की आवश्यकता है, और चिंतन मनन करने के लिए मन की सहायता की आवश्यकता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैन दर्शन का मानना है कि शुद्ध आत्मा को अनंत ओके नहीं तो हो गया। हाँ, चिंतन मनन आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि आजकल मेडिटेशन का चल रहा है कि भाई ओ मैं तो शुद्ध आत्मा मेडिटेशन, चिंतन मनन जो है आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है, ये वैभाविक गुण है। शुद्ध आत्मा चिंतन मनन नहीं करती। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैन दर्शन में प्राणी के विकास को जब चर्चा करता है तो 2 तरह के विकास होते हैं, भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास। और साइंस में जब एवोल्यूशन हुआ तो उसमें कोई आध्यात्मिक विकास की बात नहीं करते, उसमें सब भौतिक विकास की बात होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है साइंस की सोच में और जैन दर्शन की सोच में। कि नेक्स्ट स्लाइड। प्राणी के दोनों विकास युगपत होते हैं। अगर भौतिक विकास होगा तो आध्यात्मिक विकास भी होगा। प्राणी का भौतिक विकास प्राणों की संख्याओं पर निर्भर करता है। नेक्स्ट स्लाइड। 3 प्राणों वाले संगी असंगी जीव जो निगोजिया जीव होते हैं वो सबसे कम विकसित माने जाते हैं, ये सबसे कम भौतिक विकसित होते हैं। और 10 प्राणों वाले संगी जीव अधिक भौतिक विकसित होते हैं। तो ये बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत क्लियर है कि इस एवोल्यूशन में कि एक निगोजिया जीव से 10 प्राण तक जाओगे तो भौतिक एवोल्यूशन होगा। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, प्राणी का आध्यात्मिक विकास कार्मिक भार के मोह की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो मैंने जैसे बताया 2 तरह के विकास हैं, एक भौतिक विकास और एक आध्यात्मिक विकास। भौतिक विकास प्राणों पे निर्भर करता है, ज्यादा प्राण होंगे तो ज्यादा विकसित प्राणी होगा। और लेकिन आध्यात्मिक विकास जो है मोह के साथ डिपेंड करेगा, मोह। और नेचुरली इस ये माना जाए तो निगोजिया जीव का मोह सबसे ज्यादा होता है, निगोजिया जीव का मोह सबसे ज्यादा होगा, और जो 10 प्राणियों का जीव जो होगा वो उसका मोह कम हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। और जैसे मैं बताया कि ये मोह जो एक टेक्निकल टर्म है जो मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है, मिथ्या तो कम कषाय कम नौ कषाय। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, एनीवे मेरे पास आई थिंक मैं let's go. I think I will forget about this. I'm showing this evolution, the physical evolution in a figure, but I'm skipping that figure. Let's go to the next slide. या एक सेकंड, बहुत ये दिख भी नहीं रही है, तो आपको दिख रही है स्लाइड? ये कुछ
क्या हो गया भाई? हाँ, ये स्लाइड दिखने, इसको तो छोड़ो, या अगली, बस लेट्स गो, लेट मी कंक्लूड माय टॉक। या नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकृति में इंद्रियों और मन की क्रमबद्धता बिना किसी आशा के संभव नहीं है। देयर इज ए सर्टेन हायरार्की। पहले टच होता है, फिर टेस्ट होता है, फिर स्मेल होती है, फिर विजन होता है। क्यों यह है? और सबसे बाद में मन डेवलप होता है। कोई रीजन तो जरूर होगा, ये तो है नहीं कि बिना किसी कारण से। नेक्स्ट स्लाइड। इंद्रियों और मन की कर्मबद्धता जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत पर आधारित है। तो हम, क्योंकि जैसे जैसे मोह कम होता जाता है, ये फिर ये इंद्रियां डेवलप हो जाती हैं और फिर मन डेवलप होता है। तो हर एक चीज मोह की तीव्रता, मोह कर्मों के भार पे डिपेंड करता है, और ये कर्म सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे विचार से। प्रकृति में इंद्रियों और मन की क्रमबद्धता क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने कभी सोचा ही नहीं, एक इंद्रिय वाला खाली आंख हो उसको और टच ना हो आंख, ऐसा भाई, ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि भाई एक इंद्रिय है और आंख वाला एक इंद्रिय है, ऐसा होता नहीं, बस टच वाला होगा। तो ये क्या है कि एक इंद्रिय होगी तो खाली पहले टच ही होगा? तो ये इंद्रियों और मन की जो कर्मबद्धता क्यों है इस तरह से, तो ये बहुत अच्छा शोध का विषय है। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, हम, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है ऐसा होता है, लेकिन ये मेरे विचार से ये शोध का बहुत अच्छा विषय है। और इस शोध से विज्ञान के एवोल्यूशन और नैतिकता को समझने की सहायता मिलेगी, क्योंकि विज्ञान तो आध्यात्मिक विकास की बात ही नहीं करता, तो एवोल्यूशन में, और तो फिर मोरालिटी की बात ही नहीं करता, कुछ नहीं। तो अगर हम ये कर्मबद्धता पे थोड़ा जोर देंगे, तो शोध करेंगे, तो इससे साइंस को मदद मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड। या आई विल कंक्लूड विद दिस सेंटेंस। मुझे इस आरटीएम से एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, मुझे शोध करने की दिशा मिल गई। मैं बहुत दिनों से सोचा मैं क्या करूं, किस चीज पे काम करूं। अब मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। मुझे तो खाली मन में इंद्रियों की और मन की जो कर्मबद्धता है ये क्यों है, कैसे हुई, और मैं एक्सप्लेन करूं। एनीवे, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू। Yeah, just leave it. I think this, we have plenty of, I took a lot of time, so thanks. Just quit. अनिल साहब, आप कंट्रोल करिए। अरे नहीं, आप ही बोल रहे थे, मैं ऐसा सोच रहा था। अच्छा। थैंक यू वेरी मच सुभाष जी। आपने बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किए। सबसे पहला तो ये बात कही कि वो फंड जिसको मिलता है, रिसर्च उसमें भागती है और हम लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। ये आपका एक अच्छा सोच है। और मैं समझता हूँ कि कछारा साहब भी इस बात से खुश होंगे कि आपने कम से कम इस बात को रखा कि हम जैन धर्म के छोड़ करके क्यों काम करते हैं। अगर हम ऐसी चीज मानेंगे तो हमारा जैन धर्म ही खत्म हो जाएगा। खैर, ये चीज अच्छी है। और आपने अपनी खुद रिसर्च की डायरेक्शन भी बड़ी अच्छी तरह से पकड़ ली है, बड़ा अच्छी बात है। तो थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये इस आपके टॉपिक पर क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चन चैट बॉक्स में आए थे उनको लेंगे। तो अभी एक मिनट में चैट बॉक्स में देख लेता हूँ किसी का है। पर अ, पराग पराग जी का तो हैंड रेज किया हुआ है। पराग जी बोलिए सर, डॉक्टर पराग जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। सबसे बहुत बहुत अच्छा था आज का। पिछले का जो आरटीएम था वो मिस हो गया मेरा, वो ट्रैवलिंग में था, लेकिन आज का भी बहुत अच्छा हुआ। तो सुभाष जी को एक मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हिम, बहुत अच्छा उनका लेक्चर रहा।
तो मेरा ये जो एवोल्यूशन वाला बात सुभाष जी ने कही एट द एंड, कि पांच इंद्रिय जो है, एक इंद्रिय से पांच इंद्रिय तक एवोल्यूशन जो होता है, वो एक बहुत बड़ा वो एक सब्जेक्ट है कि वो कर सकता हूँ। तो मुझे अभी एक ऐसा सवाल था कि ये पांच महाभूत जो है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये इसका और पांच इंद्रिया का कुछ एवोल्यूशन में रोल है क्या? तो पहले जो टच सेंसेशन है वो पृथ्वी से कनेक्ट होता है क्या? बाद में जल से और अपना रस इंद्रिय का जो है वो कनेक्शन, बाद में अपना जो वायु और घ्राण इंद्रिय का कनेक्शन, अग्नि और जो दृष्टि है अपना, जो लाइट लाइट एंड द विजन जो है, अग्नि है वो उससे कनेक्शन, और आकाश जो तत्व है वो अपना श्रवण का। ये जो पांच जो है उसका कुछ कनेक्शन और एवोल्यूशन में उसका रोल है क्या नहीं, उसका एक सवाल था मेरा सर। भाई पराग जी, ये बिल्कुल, क्योंकि ये मुझे दिशा कल ही मिली है जब मैं इस पे काम कर रहा था पेपर पे, तो ये बहुत सोचने का है कि ये सब किसका कनेक्शन किससे है। ये कभी हमने कोशिश करी ही नहीं इस तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखा जाए कि भाई कौन सी ये इंद्रिया जो है कौन से महाभूत से काम कर। एक तो थोड़ा सा मैं महाभूत से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे एग्री नहीं करता, क्योंकि जैन धर्म में पंच महाभूत जो है, हमारे यहाँ जो मैटर की क्लासिफिकेशन है वो फर्क है महाभूत की डेफिनेशन से। पर एनीवे, मतलब महाभूत से कनेक्ट तो किया जाना चाहिए और किया जा सकता होगा, तो कोशिश करूंगा डेफिनेटली। अभी तो मैंने इसमें गैस ही कर सकता हूँ, इससे कोई फायदा नहीं है, इस पे काम किया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। एलसी जैन साहब। हाँ सर। हाँ भाई लक्ष्मी। सुभाष चंद्र जी, हाँ जय जी, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। आपने बहुत नए नए पॉइंट उठाए हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक पुस्तक है क्रमबद्ध पर्याय, आपने शायद देखी हो। जी हाँ। उसमें उसमें ये सब आपकी क्यूरियसिटी है जो है उसमें सब मिल जाएगी। उसमें क्रमबद्ध पर्याय में लिखा हुआ है, एक इंद्रिय जीव से लेके पंचेंद्रिय, संगी असंगी सभी के बारे में उसमें विस्तार से दिया हुआ है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। मुझे अभी ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा है, नहीं, वो मेरे पास है, मेरे पास हाँ पुस्तक है। तो हाँ जी हाँ, वो बहुत अच्छी है। दूसरा ये था कि मोह के बारे में आपने कहा, मोह कषाय का एक अंग नहीं है सर। मोह जो है ना कषाय में आएगा ना नो कषाय में आएगा। मोह तो अपने आप ही है, जो कि तीर्थंकरों को भी अंतिम समय 13वें गुण स्थान तक भी परेशान करता है मोह। तो मोह कुछ अलग चीज है साहब। वो कषाय वगैरह से उसका मुझे नहीं लगता कोई संबंध है। कृपया आप बताएं क्या है मोह का कषाय और नो कषाय से क्या संबंध है। भाई मोहिनी करेब की जितनी ये जो 16 कषाय की और 9 कषाय की और मिथ्यात्व की 3, 16 9 28 प्रकृतियां हैं। ये मोहिनी करेब 25 की जो प्रकृतियां हैं ये 25 मोह 25 है। प्रकृतियां हैं। 25 कषाय की 25 प्रकृतियां, 25 16 तो और 9 कषाय 25। और 9 कषाय की है, मिथ्यात्व की 3 है। हाँ और 3 मान लो, 1 मान लो, तो कौन किस तरह से करोगे, तो 26 से 28 प्रकृतियां हैं, ये मोह है। तो तीनों चीज है उसमें इंक्लूड, मिथ्यात्व भी है, कषाय भी है, 9 कषाय। इसमें कोई, ये तो धवला डेफिनेशन बहुत बढ़िया दी हुई है। पर हाँ ये है कि लोग मतलब मोह को ऐसे ही कह देते हैं, राग द्वेष सब कुछ। पर मोह ये तो टेक्निकल टर्म है और बिल्कुल उसमें कोई धवला में मिल जाएगी ये डेफिनेशन जी आपको। ठीक है, जी। धन्यवाद धन्यवाद। एलसी जैन साहब, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं। एक क्रमबद्ध पर्याय डॉक्टर हुकमचंद वारिल का लिखा हुआ है, उसका जी हाँ। इस विषय वस्तु से कोई संबंध नहीं है। हाँ, हाँ? रमेश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी जय जी। बिल्कुल, जो मैं क्रमबद्ध पूछने के पर्याय। अलावा थोड़ा सा मैं अपने विचार ये कहना चाह रहा हूँ कि आदरणीय सुभाष जी ने, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ग्रांट की बात है, वो तो चलो अपनी जगह कुछ भी होगी, मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा। देखिए, वो धर्म की बात है और विज्ञान की बात है। अगर मैं समझता हूँ जैस का
आधार ही ये है कि हम इन दोनों में समन्वय कैसे स्थापित कर सकते हैं, कहाँ स्थापित कर सकते हैं। न मैं किसी का समर्थन कर रहा हूं, ना किसी का विरोध कर रहा हूं, लेकिन हमको सत्य को ढूंढना है। जैसे हर साधु सत्य के लिए घर से छोड़ के बाहर निकलता है, आत्मा का सत्य कहिए, दुनिया का सत्य कहिए, विज्ञान जो है यूनिवर्स के सत्य को ढूंढ रहा है। और दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। हम किसी को ना विज्ञान को छोड़ सकते हैं, ना आत्मा के आध्यात्मिक पक्ष को छोड़ सकते हैं। तो मेरा तो यही कथन है कि देश का जो आधार है वह डेवलप होना चाहिए कि जैन धर्म की बातें और विज्ञान की बातों में समन्वय कैसे स्थापित हो, कहाँ विरोध ना करें किसी का भी। धन्यवाद। जय जी। थैंक यू। ये रमेश जी, मैं कॉम्प्लीमेंट्री खाली है। ये बताना चाहूंगा कि हमारी अप्रोच ये हो रही कि हम विज्ञान से लेंगे। जैन धर्म तो नहीं, विज्ञान जैन धर्म को मानता ही नहीं। वो तो ना इंद्रियों के कुछ मानता है, ना मन। तो जब जैन, तो किसी तरह से विज्ञान को कन्विंस करना पड़ेगा भाई ये भी है। तो एनीवे, मतलब दोनों की मान्यताएं काफी फर्क है, और मतलब आसान नहीं है कि दोनों को तुम, हाँ, कुछ चीजों में जहां लगता है भाई पास आ सकते हैं तो करना चाहिए, वो कर ही रहे हैं हम लोग। लेकिन मुझे लग रहा कि एक तरफ जा रहे हैं हम ज्यादातर। हम अपने आप को बदल के विज्ञान की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। विज्ञान को कुछ हमसे मिलेगा ऐसा लग रहा है कि हमको विज्ञान को कुछ दे नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना गलत है। हमको विज्ञान को भी कुछ देना की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें हम पिछड़ गए हैं। विज्ञान को कुछ देते ही नहीं, विज्ञान सुनता ही नहीं। तो कुछ कम से कम उसका कुछ कान का मैल तो निकालो यार, कि तुम सुनना तो शुरू करो। अभी तो सारे ऐसे बंद करे पड़े हुए कुछ। एनीवे, थैंक यू रमेश जी। नहीं, धन्यवाद सर। ठीक है सर सर। बनाई ये सकता रमेश जी का कमेंट जो चाहिए। भाव है कहने का ये है कि हमको कुछ विज्ञान की मान्यताओं को भी एकदम से गलत नहीं कह सकते हैं। जैन जी धर्म की जी बिल्कुल। मान्यताओं में तो हम लोग श्रद्धा रखते ही हैं, एक जी सर। दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री पूरक हैं। तो ये भावना रखनी चाहिए। जी जी। विपिन दोषी साहब, डॉक्टर विपिन दोषी जी कुछ कह रहे थे क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर। नहीं नहीं अनिल जी, आपने सही कहा। हुकमचंद जी बारिल की बुक है, और क्रमबद्ध पर्याय की जो बात आती है, जो सुभाष जी ने बात कही, उससे क्रमबद्ध पर्याय का कोई लेना देना नहीं है। इट्स एन एब्सोल्युटली अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। The the serial consequences which is happening into Putkal and soul is क्रमबद्ध पर्याय, and which are not interdependent but they are independent. ये क्रमबद्ध पर्याय की पूरी भाषा की बात है। तो ये जो आपने बहुत टाइम क्रमबद्ध पर्याय का उपयोग किया, वो बिल्कुल जैन दृष्टि से तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय और आप जो बात कर रहे हैं वो दोनों विषय बहुत अलग है। वो क्रमबद्ध नहीं होता है, कर्मबद्ध हो सकता है, लेकिन क्रमबद्ध तो बिल्कुल नहीं है। मैं भी यही कहने जा रहा था, लक्ष्मी बिल्कुल बिल्कुल सही लक्ष्मी बोले चंद को आप। यही कहने जा रहा था, पर मैं उनका मतलब कहना नहीं चाह रहा था। लेकिन मेरा भी मानना है कि कर्मबद्ध पर्याय से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है वहां पे। मैं जब पढ़ूंगा नहीं, देखिए वही हाँ, सुभाष जी, मैं आप एक बिल्कुल शब्द बिल्कुल को फर्क समझिए, की बात कर रहा हूँ। कर्मबद्ध है कि क्रमबद्ध है। क्रम, हाँ, वही 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 exactly। क्रमबद्ध अलग चीज है, कर्मबद्ध अलग चीज है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जी। ये क्योंकि आपने भंडारी साहब का नाम लिया था, और भंडारी साहब ने भी हाथ रेस किया है, वो कुछ और स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं। भंडारी साहब प्लीज। Uh, Sir, that is a matter of opinion. We'll not discuss that, but uh, my impression is that the pyramid of philosophy should have some ground of science. I don't know to mix them, but you can't have them hanging separately. Anyway, my question is from Sanchetee Saab actually, if I am permitted to ask. Please, sir. Sir, you have taken us, you have given us a virtual tour of body and mind. So lots of questions have arisen. एक क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आपने from universe to cell you have connected mind from the minutest to the biggest, right? तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि even parts of the cell have mind or not? आपने कहा every cell has its mind, right? So can we go to further subdivisions of cell
even to molecules, do they have mind, or what is your opinion? That is question one. I have 2 or 3 questions, Yes, but let me ask this one, which is very fundamental. yes. So let me answer the first question, sir. As far as the mind, what we are meaning is the mechanism of mind. Mind is not a structure. That has to be clearly understood. It's a mechanism, and this mechanism exists everywhere. Be it the cell, within the cell, you are correct. It could be there. I have not got the references for that one. But within the cell, at least it is a miniature universe. A cell is a miniature universe. A human body is a miniature universe. And the universe, of course, is there. And a galaxy, perhaps we are miniature galaxies. So these are the points that we are almost the same. And mind is one of the intermediate in the ultimate, whether so this is the where I stand is that below the means subcellular, what you are asking is it is there, but I am not got the references for that one. And even I'm contemplating. That's what you asked. What you think? I'm contemplating. Even non-living also will be having the mechanism of mind. That is the. We can easily extend it to DNA and RNA. Yeah, quite correct, but can we go further down to molecular level, to atomic level? I'm Because contemplating, sir. my understanding is that Manovargana is very subtle. It comes very early in the synthesis of Parmanus, you know. Yes. So it can be part of bigger Varganas. I don't know whether that is correct. But every small Vargana can be a part of a bigger Vargana. So Manovargana can be part of a molecule, for example. Quite correct. So that is the one point. So आप सोच के बताइए मेरे को जरा. I think it's very important, and that is how we can do. The second question I want to ask is, you talked of neural structures. Are the neural structures same as karmas? Can we relate them? कि जैसे जैसे न्यूरल स्ट्रक्चर होंगे वो वही कर्म होते हैं एक्चुअली. अगर बहुत इंटेंस होंगे तो कर्म बहुत गहन होंगे, और बहुत छोटे होंगे तो कर्म का वो प्रदेश और जो भी उनकी इंटेंसिटी वगैरह. कैन वी कनेक्ट दैट आई थिंक इज. Yes, I thought in this aspect also. When we say the karma, when karma comes into the, whether it's a good or bad karma, they are like a viruses in the laptop or the computer. That's my way of understanding is that they are means my program becomes corrupt. And program, I mean the mind and the soul. That gets corrupted because of the karma. That's it. And what you are doing is with the meditation and all other things is the ethical living, and you are defiling these karmas. Antivirus, put it. That's what, in a practical way, I have understood. नहीं, मेरा पॉइंट था कि जो न्यूरल स्ट्रक्चर बनते हैं, आपने कहा सिनेप्सिस से मिलके और एक स्ट्रक्चर बनते हैं, कैन दे बी रिलेटेड टू कर्मा? आर दे कर्मा? Yes, sir. Interconnection, not the structure. It is the interconnections which are much more important. They guide all our instinct, all our emotions, this one. So it is the interconnections between the various synapses. Synapses, interconnection between the two neurons. That is much more. And I said each neuron has got around 10,000. Around 10,000 non-optics one. प्रताप जी, अगर मैं इसको ऐसे समझ के सोचूं कि 340 टाइप्स ऑफ जो मति ज्ञान दिया है हम लोगों को, ठीक है, और वो मति ज्ञान यानी जैसे भी हमारी डेवलपमेंट जैसे ही अच्छी होती है तो मति ज्ञान बढ़ता है अपना. Yes. So probably again it is related to our कर्मास. ज्ञानावर्णीय कर्म जो है वो जितने मति ज्ञानावर्णीय कर्म जितने कम है उतना अपना न्यूरल activities, or let's say the purity of our neural action has to be better, because quite correct.
अपन जो द 4 स्टेजेस ऑफ मति ज्ञान की बात करते हैं और Yes. उसके डिफरेंट डिफरेंट जो भेद दिए गए हैं उस पे काफ़ी ये समझ आती है कि भाई जैसे भंडारी साहब ने पूछा कि भाई एक आदमी खाली देख ही सकता है, दूसरा आदमी उसको एनालाइज कर सकता है, तीसरा आदमी उसको और सिंथेसिस कर सकता है, चौथा उसको सिंथेसिस भी करता है और मन के अंदर भी रखता है। तो ये जो लेवल ऑफ मति ज्ञान है, that is obviously because of the Gnanavarniya karmas. So you put it in current language is the antivirus, and your system works better. That's I try to, rather than going into the complicated language like yours and other thing, I have tried to understand in the antivirus. My good karmas, my good intentions, my meditation, all they help me in going into that side. That's यानी कि They are भंडारी साहब, मैं antivirus. ये समझ सकता हूँ मति ज्ञानावर्णीय कर्म का जो लोड है वो जैसे जैसे कम होता है तो उसकी आदमी की जो क्षमता है वो क्षमता पे ज्यादा होती है. दैट कैन बी रिलेटेड टू द न्यूरल डेवलपमेंट. Yeah, the functioning and the structure it will be better, obviously, sir. Sir, if I am permitted to ask one more question, what is Sir. your opinion of telepathy, about telepathy? Is it the universal mind, or it is some exchange? Can you explain this based on your model? Yes, sir. Universal mind is a general, and specific is the regional mind. Between our individual mind to the local or regional mind, that is where telepathy comes into, where myself and yourself will be connected. In the model which I tried. So, what is the mechanism there? It has to be the wave functions. That's what physics I am not very conversant, but to my understanding, it is basically the waves. And as Dilip ji has asked, can it be sub waves also, or the sub non-EM? I am not very sure, but it has to be a communication. It cannot be without any communication. So this non-EM, can we specify? Maybe Paragji can do it. I don't know what he means by non-EM. It's a very interesting one, sir. It shows our deficiency in the knowledge. But non-EM must be existing, must be. But whether it exists or not. Paragji is there. Can you Yes, sir. explain Sir, what do you mean by non-EM? Sir, I will next time I will come prepared, and then maybe I can do this. Yes, sir. And this Pancham, yes, sir. The next week is yours lecture, so yes, sir. I'm On sure you will theosophy. be touched in an authentic way. No, I'm not used to presenting, but I will try my best, sir. Sir, welcome, sir. भाई मैं एक कमेंट करना चाहूँगा. या ये एक ऊर्जा वर्ड है. एक दिक्कत ये है कि कुछ वर्ड हैं जो हम दोनों भौतिक में और आत्मिक में, आत्मिक ऊर्जा, ये ऊर्जा जो है ना, आत्मिक ऊर्जा जो है ये भौतिक ऊर्जा से बिल्कुल अलग है. तो हम करते क्या है कि ऊर्जा की बात जब भी कहीं करते हैं, ऊर्जा की बात या पावर की बात या वेव की बात, और उसको डिफरेंशिएट नहीं करते भाई कौन सी ऊर्जा की बात कर रहे हो तुम. अब जैसे मैं डायबिटिक हूं और सुबह को नाश्ते में बैठता हूं और मिठाई देखता हूं, तो मुझे जो ऊर्जा चाहिए आत्मिक शक्ति की, मैं मिठाई ना खाऊं, वो मैं कितना फिजिकल पावर हूं, कितना स्ट्रॉन्ग मैं दंड बैठक कर लूं, साली आत्मिक ऊर्जा बिल्कुल अलग ऊर्जा है यार. भौतिक ऊर्जा से कोई ताल्लुक ही नहीं आत्मिक ऊर्जा का. अब झगड़ा यह है कि आत्मिक ऊर्जा वर्ड से फिर वो उसको सारे को दोनों को से कंबाइन कर देते हैं. तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है. जब हम माइंड, ऊर्जा, वेव्स, एनर्जी, ये सब जो है दोनों तरफ लगा लेते हैं. एनर्जी हुई तो भौतिक एनर्जी भी, आत्मिक एनर्जी. तो ये जब वर्ड यूज करते हो एनर्जी, उसके साथ क्वालिफाइंग जरूर लगाओ भाई कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हो तुम. वो दोनों तरफ की सोचता कि यार क्लैरिफाई करने में दिक्कत पड़ेगी, एक ही बात कह दो और दोनों तरफ का, ये बहुत गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग साला ये. एनीवे, थैंक यू. This is a good point you have made, Subhash Jain साहब.
कि आत्मिक ऊर्जा is different from electromagnetic waves. Yeah. That I agree fully. But we have to understand what it is. What is the It is nature a of form आत्मिक of ऊर्जा? it is a एक form of चीज की है, वीर्य or something ये like that. वेव्स What की विल बात विल करें ना पावर सर, सर, विल पावर। ये एनर्जी में भी जैसे मैकेनिकल वेव्स हैं, साउंड वेव इज मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रो इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो देयर मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, दिस मे बी कंसीडर इन डिफरेंट वे। जी मैं संचेती साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा, दो एक क्वेश्चन है उनका, अगर क्विकली आंसर हो सके तो चैट बॉक्स से देखिएगा। जी अ, ये तो चंद्रकांत जी का है, और एक डॉक्टर और सुरेंद्र है सिंघवी जी शायद, वांट्स टू आस्क। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सुरेंद्र सिंघवी जी बहुत देर से हाथ रेज कर रहे थे, आप बोलिए सर। I want to commend Dr. Subhash Jain, who came to Dayton and gave a course on Jainism at University of Dayton. Did a great job. So Subhash, I appreciate that very much. Thank you जी, thank you थैंक so यू much. सर। Second thing, Digambar Buddhi Praman Sagaji talks about Bhavana Yoga. By autosuggestion, you can affect your unconscious mind. You can change yourself. If you remind yourself, I want to be calm, I don't want to be angry, keep on telling autosuggestion, it helps. Is there anything like unconscious mind that can affect your health? Bhavana Yoga. जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सुहास जी? नहीं भाई, मैं ये तो प्रताप के लिए क्वेश्चन है ये, मुझे तो चलिए ठीक। संजय जी साहब, ये चैट बॉक्स का अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए कुछ उसमें नहीं, कुछ मेरे आप को quickly- दिखाई नहीं दिया चैट आकांक्षा बॉक्स में। आकांक्षा ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन रखा है, एंड शी हैज रेज्ड द हैंड आल्सो। यस सर। सो जय जिनेन्द्र जी, मैंने पीएचडी किया हुआ है जैन धर्म में ही, तो मैं आगे इस चीज में और बढ़ना चाहती हूँ। तो मेरा इसी चीज में एक क्वेश्चन था प्रताप सर, जो आपने लास्ट में एक क्वेश्चन रेज किए थे, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि आर माइंड एंड मैटर कनेक्टेड थ्रू मीनिंग और अवेयरनेस। सो आई थिंक मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये दोनों मीनिंग और अवेयरनेस से ऊपर हैं। अगर हम माइंड को एज अ भाव माने या आत्मा माने, और जो मैटर है उसको हम कर्म माने, तो ये दोनों का, तो जब भी हम योग का मतलब हमारे बॉडी में जब भी योग का संचय होता है, तो कर्म पार्टिकल्स आके हमारी बॉडी से मिलते हैं या सोल से मिलते हैं, क्योंकि वो ही रिकार्नेशन के बाद, मतलब सोल के रिकार्नेशन के बाद भी कंटिन्यू रहते हैं। तो आई थिंक मतलब ये मीनिंग और अवेयरनेस के से ऊपर है, मतलब आई डोंट थिंक कि ये इस चीज से कनेक्टेड होगा, मतलब ऐसा मेरा क्वेश्चन है। नहीं, ऐसा है कि मीनिंग मीन्स दे आर materialistic connected, and when I said awareness, when you want to my mind, when you want to close the topic, they are connected or not, then you put it consciousness, you put the soul, or you put the whatever the word you want to put it. That is the choice of the individual. But when I say awareness, because you can't quantify awareness, you can't say the, so either you are closing the question or you are. So I said, can it be connected or not? Mind and matter, they are one continuum. As in the first slide I showed you, that there is a continuum from the basic to the universe. There is a total connection. Can we establish that connection? That was my intention of the ओके 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 ओके। सो मेरा एक और क्वेश्चन था कि आपने बोला था कि जैसे हम माइंड को यूनिवर्स से कनेक्ट है या नहीं है, ये चीज को भी मतलब है, हम इसको इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो एक जिनवाणी लिखी थी, मुझे अभी जिनवाणी का नाम नहीं ध्यान आ रहा, तो उन्होंने इस तरीके से कहा था कि जैसे हम कुछ भी कर्म या हम कुछ भी किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, तो अगर हम अच्छा सोचते हैं उनके बारे में, तो डेफिनेटली उनकी साइड से भी रिpercussion आता है वैसा ही बुरा, और अगर हम अच्छा सोचते हैं तो उनकी साइड से भी अच्छा आता है। तो आई थिंक इस तरीके से हम कुछ एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये कनेक्ट हो सकता है, ये कनेक्शन ऐसा। exactly, you are correct, sir. ओके
एक मेरा क्वेश्चन सुभाष सर से और है कि जैसे कि अभी हमने आपने जैसे बताया कि निमित्त को अगर निमित्त अच्छा होता है तो तो उसके उसके अकॉर्डिंग ही हमारे मतलब कर्म भी अच्छे आते हैं, और अगर निमित्त बुरा होता है तो हमारे कर्म भी बुरे आते हैं। तो इस चीज में बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे कि हम मंदिर में हैं और मंदिर में कोई हम मैं हूं और कोई एक दूसरा है। मंदिर में हम भगवान को देख रहे हैं और निमित्त जबकि अच्छा है, हम भगवान के सामने हैं तो हमारे परिणाम अच्छे होने चाहिए, लेकिन वहीं एक और कोई है जिसके भगवान को देख के परिणाम बेकार हो रहे हैं कि ये कैसे से हैं, अजीब से हैं। तो आई डोंट थिंक कि निमित्त पर हम पूरा आरोप लगा सकते हैं कि मतलब अगर निमित्त अच्छा है तो ही हमारे परिणाम अच्छे होंगे या कर्म अच्छे होंगे, निमित्त बुरा है तो ही, क्योंकि मतलब ये तो निमित्त तो शायद वो चीज कही जाती है कि जब काम आराम से चल रहा हो, स्वतः हो रहा हो, और जिस चीज पर आरोप आए कि इसकी वजह से वो काम हुआ, तब हम निमित्त पर आरोप देते हैं, ऐसा कुछ। नहीं भैया, ऐसा है कि आप पॉसिबल निमित्त में और निमित्त में फर्क करना पड़ेगा। पॉसिबल निमित्त तो अनंत है। जब तुम बता रहे भगवान भी है और एक और आदमी खड़ा है, दोनों पॉसिबल निमित्त है। आप उन दोनों में से किसको चुन रहे हैं वो निमित्त बनता है। तो जब भाव बने, भगवान को देख के भाव बनेंगे, फर्क बनेंगे। आदमी को देख के भाव बनेंगे अलग। तो अगर आदमी निमित्त बन गया तो अलग तरह के भाव आएंगे, भगवान निमित्त बन गया तो अलग तरह के भाव आएंगे। तो निमित्त तो बहुत है, पॉसिबल निमित्त तो बहुत अनंत है। उनमें से आप छांटते हैं, तो आपने भगवान को कर लिया और फिर लड़के की तरफ देखा तो निमित्त बदल गया तो भाव बदल जाएंगे, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। I think Akanksha, I हाँ mean, जी, to answer this very shortly, पंच समवाय पढ़ेंगे आप तो क्लैरिटी है कि सिर्फ हाँ जी, निमित्त काम बिल्कुल। नहीं आता है, उस समय पे आपका पुरुषार्थ क्या है वो भी काम में आता है। So that's हाँ what बिल्कुल। Dr. Subhash bhai is trying to say, but it's very simple way to understand। अगर आप व्यवहार की बात करते हैं, अगर निश्चय वाले को तो निमित्त को मानेंगे ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ठीक। चलिए साहब, ये आज सेशन बहुत अच्छा रहा। मेरे ख्याल में ये अभी स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि टाइम काफी हो गया है। तो आज तीन वक्ताओं ने ये अपने बात रखी, डॉक्टर प्रताप संचेती साहब, डॉक्टर सुभाष जी और मिस्टर आदित्य जैन ने। सो तीनों के अपने अपने हिसाब से बहुत विषय वस्तु अच्छी थी, लेकिन यह है कि आगे हम और इसको कंटिन्यू रखेंगे। और इसमें एक मैं बात कह दूं कि साहब, एक सेशन में या दो सेशन में हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं। और हमारा उद्देश्य ही ब्रेन स्टॉर्मिंग है, डिफरेंट आइडियाज आने चाहिए, अपोजिट आइडियाज भी यहाँ हैं, हमें कोई उसमें गुरेज परहेज नहीं है। और ये इन दूसरे धर्मों से भी कुछ अगर हमको ऐसा हिंट मिलता है तो उसे लेने में भी हर्ज नहीं होना चाहिए। और अगर विज्ञान से हमको कुछ मिलता है तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमको दिखता है कि, अब जैसे कि मैं मोटा एग्जाम्पल लूँ, पृथ्वी के बारे में अवधारणा है, तो हमको विज्ञान से लेने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन ये है कि हम एकदम से किसी फिलॉसफी को, जैन धर्म को नकार दें, वो भी ठीक नहीं है। ये पूरक हैं एक दूसरे के। हमको इसको समझने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और सही वस्तु स्थिति तक पहुंचने के लिए अपने को प्रयत्न करना चाहिए। उसी उद्देश्य से हमने इसको रखा है। तो इसमें कोई डिफरेंट ओपिनियन हो तो इसको किसी को हार्ड पर नहीं लेना चाहिए, और सभी का स्वागत है। और चाहे अपोजिट ओपिनियन हो और आस्तिक हो, उनका भी सबका स्वागत है। तो एक तो ये बात है। और दूसरा, जो मैं एक अगले उसके लेक्चर सीरीज, ये अगला सेशन है, उसमें भी हमारे तीन लेक्चर हैं। डॉक्टर प्रताप, डॉक्टर पराग 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 मेलमुर्की है। साहब, हाँ, और फिर श्री दिलीप जैन, सीए मुंबई, और डॉक्टर संगीता विपिन शाह। तो इन तीन के लेक्चर हैं और इसका हम अगली बार इनका ये सुनेंगे। और पराग जी तो काफी, मतलब हमसे इंटरेक्शन हुआ है, जिस तरह से हमने उनको समझाया, जाना है, तो इनका ज्ञान बहुत विशद है। और और बाकी के जो ये अपने दिलीप जी हैं, वो एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। वो एनवायरनमेंट के ऊपर काफी जोर देते हैं, और प्रकृति से हम क्या क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं उसे, उस पर अपने विचार रखेंगे। और ये
संगीता जी भी अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। तो अगले बार वही आप सब लोग आए और इस इंटरेक्शन में भागीदार बने। इसमें चंद्रकांत जी का हम क्वेश्चन नहीं ले पाए, उनको बाद में आप संचेती साहब से अलग डिस्कस कर लें। तो इसके साथ ही आज का ये सत्र हमारा समाप्त होता है। और ये अ, अपने भंडारी साहब या पूर्वी जी कुछ बात कहना चाहें तो आगे कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन रहा साहब, वेरी illuminating, we learned so many things. So I want to thank all the speakers on behalf of JS, and all I want to submit is कि ये जो विज्ञान और ये धर्म और ये फिर ये जैन धर्म और ये हिंदू धर्म, ये सब अपने माइंड में है कंपार्टमेंट्स. वी हैव टू टेक एन इंटीग्रेटेड अप्रोच. So if we take an integrated approach, they all merge into Gyan. So that is my submission and that is how I think we would like to proceed. But बहुत ही अच्छा सेशन रहा. I thank Dr. Anil Kumar ji, Sanchetee साहब for organizing this, and I think Neeraj is the one who started this whole he wanted this exercise. So I think it is very fruitful. Thank you very much to all those who have come. Or Purvi, you have any announcement?